So hello students. So today we will start the exercise 1.4. In this exercise we will cover the forming numbers, means the topic of this exercise, the forming numbers, even numbers and odd number, successor and predecessor. Okay, means इस एक्सरसाइज में आज हम क्या डिस्कस करेंगे? फॉर्मिंग नंबर्स मीन्स कैसे नंबर्स बनते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, किसी भी नंबर का सक्सेसर क्या होगा, उसका प्रेडिसेसर क्या होगा, वो सारी बातें हम आज इस एक्सरसाइज में यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ यू गॉट द आइडिया. लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मिंग नंबर. ओके, सपोज दैट we have a question like as make the smallest 4-digit number from the given situation. Okay, what is the question? Make the smallest 4-digit number. It's your question. Let's discuss with this question. Make the smallest 4-digit number from the digits what? 9, 4, 0 and 2. Okay, then how will you solve such types of the question? Answer, you will write like as the smallest 4-digit number इक्वल टू. मीन्स क्वेश्चन क्या होगा आपके लिए कि कहेगा आपसे कि 4 मीन्स 4 डिजिट का एक ऐसा नंबर बनाओ जो कैसा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए. उसमें उस वाले केस में आपको क्या दे रखा होगा? डिजिट्स दे रखी होंगी. जब डिजिट्स दे रखी होंगी तब हम जब भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है तब हम क्या करते हैं, उन्हें असेंडिंग, उन्हीं जो भी नंबर्स दिए गए होंगे उनको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. ओके, मीन्स the number which are given, which we have to arrange them in the ascending order. Then we can easily get the smallest number. Now here, which one is the smallest? 0, but we will not place the 0 at the first position. Means from your left side. Okay, so we will place the 0 at the always 0 at the second place. So for what will be the first place here? 9, 4, 0, 2. Means which one is the smallest? Except the 0, 2. So we will first we will write the 2 here. Then 0, then 4, then 9. So it will be the smallest 4-digit number forming by these 4 digits. Okay, you got the idea. मीन्स जब भी हमें इस 4 अंकों का मीन्स 4 डिजिट्स का जो छोटा नंबर बनाना होगा तब हम उन सभी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको लेकर चलेंगे. और जब कभी हमें मान लीजिए द सेम क्वेश्चन कि मेक द लार्जेस्ट 4-digit number. What is the question next? Largest 4-digit number. Then how will we do such types of the question? Here answer, largest 4-digit number is what? In that case we will arrange them according to their descending order. Okay, now what will first we will add the greatest, then smaller, then स्मॉलर एंड इन द एंड स्मॉलेस्ट. ओके, तो जब हमें कभी लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर बनाना होगा, मीन्स कितनी भी डिजिट का नंबर अगर हमें बनाना होगा तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उनको क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम उन्हें अरेंज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम उनको प्लेस करते चलेंगे. सो इन दिस वे यू कैन ईजिली राइट डाउन द लार्जेस्ट नंबर और द स्मॉलेस्ट नंबर. ओके, एंड सपोज दैट ये कंडीशन उस पर लागू होगी जब मान लीजिए जब डिफरेंट हमें नंबर दे रखें. इफ समबडी सेज दैट व्हिच वन इज द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर, मींस अगर कोई आपसे कहता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4-digit नंबर्स का सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, तब ऐसे केसेस में 4 डिजिट का क्या होगा, 1, 0, 0, 0. नाउ इट बिकम द 4 digits. ओके, एंड इफ समबडी सेज द टेल मी द ग्रेटेस्ट नंबर हैविंग 4 digits, तो उसकी केसेस में क्या होगा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट क्या हो जाएगा बेटा, 4 टाइम्स हम 9 रख देंगे. वी विल राइट द 9 4 टाइम्स. ओके, एंड इफ समबडी सेज दैट द डिजिट्स कैन बी चेंज्ड, मींस इट वुड बी डिफरेंट, देन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 digit इज 9, 8. ओके, मींस digit will be not repeated
more than one time. Okay, so 9, 8, 7, 6. Okay, so in this way you can write down the greatest number as well as the smallest number. But I think it is not mentioned in your syllabus. Okay, now what is the even number? अब even number क्या है? Even number ऐसे नंबर जिनके एंड में क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा. दे आर द नंबर, दोज numbers which ends with 0, 2, 4, 6, 8 called even number. तो ऐसे नंबर जिनके लास्ट में क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो नंबर क्या कहलाते हैं हमारे, कॉल्ड even number. What? Even number. और you can say, और इसको ही हम क्या कह सकते हैं, those numbers which are divided by 2 is called even number. ओके, तो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे. और ऐसे जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे उन्हें हम ऑड नंबर बोलेंगे. उनके लास्ट में क्या होगा बेटा, 1, 3, 5, 7 एंड 9 होगा. और जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, 2 से डिवाइड नहीं होंगे, दे आर सेड टू बी अ odd number. Okay, clear? Now what is the successor and the predecessor? Okay, now come to this point. Successor, okay. Successor of any number is what? If we have any number and then if we are adding the 1 in that particular number, then we will get the successor of that number. Okay, now see here, if we have a number 948, okay, and if we are adding, we have a number 948, here we will write the successor and here we will write the predecessor. Okay, so predecessor is represented by P and successor is represented by S. Okay, what is the predecessor? Okay, so +1 in number is known as the successor, -1 in that number is known as the predecessor. If we are adding 1 in this number, then it become what? 948 plus 1 become 949. 949. So 949 is what? The successor, and 948 minus 1 is what? The predecessor of this number. So what will be the predecessor? 947. It's your answer. So in this way you can easily give the answer of the forming numbers and even numbers, odd numbers, successor and the predecessor. Okay. Now let's start the questions of this exercise. Okay. Form the greatest 4-digit number using the given digits. Okay. In first question, what is the question? Form the greatest 4-digit number. Form the greatest 4-digit number. 4-digit number using the given digits. 4-digit number using the given digit. Okay.
In this question number 1, we are discussing here the E part. Okay, so we have digits B. So in E parts, what are the digits? 5, 0, 3 and 1. Okay, now how will we solve this question? Solution: greatest 4-digit number. You have to just write down the answer only. Greatest 4, आपको क्या करना है, केवल आंसर लिख देना है, 4-digit नंबर. तो 4-digit नंबर कब बनेगा? पहले हम उनको क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर पे में अरेंज करेंगे. सबसे पहले हमें ग्रेटेस्ट वाला लिखना होगा इधर. So which one is the greatest here? In all these digits, 5, then 3, then 1, then 0. It will be the answer. Okay. So in the same way, you can also write down the smallest 4-digit number. Okay. In next question, you will get the smallest 4-digit number. So I hope you got the idea how to solve the question. Now, come to the next topic, that is even number or the odd number. Okay. Means we have to write all the even numbers between given two numbers. Okay. In question number 1, what is the question number 1? Write all the even numbers between the two given numbers. Between the two given numbers. Okay, now in this way, here we will do the A part. Okay, now what is the in A? 1, 0, 4, 6. Okay, now we have to write down the even number in these boxes. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and in end there is a number that is 1060. Okay, now see, here is your 1046. Then what will be the next even number? Okay, even number, those numbers which is ended with what? 0, 4, 0, 2, 4, 6, 8. Okay, so what is here? If the 6 is there, then what will become here? 8. And now 1050, then 1052. Okay, then 1054, then 1056, then 1058. Okay, so these are the even number. So if somebody says that write down the odd numbers between these two numbers. Okay, in that second question, in question number 2, write all the odd numbers between the following numbers. Okay, so what is the number here? In A case, 5237, and in the end 5249. 5249. Okay, so we have to write down the odd numbers. Okay, now and what are the odd numbers? Those numbers which is ended with what? 1, 3, 5, 7 and 9. तो ऐसे नंबर जिनके लास्ट में क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, वो सभी नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे ऑड नंबर कहलाते हैं. और दूसरा हमने क्या डेफिनेशन सीखी थी? Those number which is not divisible by 2 are said to be the odd number. Okay, now see, the 7 is here, then what will be the next? 5, 2, 3, 9, then 5, 2, 4, 1, because the 39 na, then 40 will be what? Even number, but we have to write only the odd number, क्योंकि 39 है, 5239 है, तो ये तो odd number हो गया. जैसे ही हम इसमें एक ऐड करेंगे then क्या हो जाएगा हमारा 5240. एंड जब वो क्या होगा, हमारा एक even number होगा, बट हमें क्या लिखना है? केवल odd number लिखना है. then we will add the
2 in that this digit. Okay, then we will get the 5241. Now what will be the next? 5243. 1 के बाद 3 आएगा, then 5245, then 5247, then 52, sorry, okay, I think 1 2 3 4 5 only. 1 2 3 4 5 only. Okay, it will be the answer. Okay, so in this way you can fill the any even numbers between the two given numbers or any odd numbers between two given numbers. Okay, now you know the successor and the predecessor, so we will not discuss this successor and the predecessor. You have to do it by yourself. By adding the 1 in that number you will get the successor, and by subtracting the 1 in that given number you will get the predecessor of that number. Okay, beta, so it's enough for today. You have to complete your work timely. Thank you, beta. Okay.